Mahipal. Present in the court of Mahipal. Now, who was this Mahipal? ये महिपाल आएगा, मिहिर भोज के बाद में महेंद्रपाल आएगा, महेंद्रपाल के बाद में महिपाल आएगा. ठीक है. So he was successor of Mihir Bhoj, Mahipal. So this man Rajshekhar, he was a very important poet and dramatist in like who was there in the court of Mahipal. ठीक है. And the scholars of this dynasty, those people introduced two things to the Arab world. अरब वर्ल्ड में दो चीजें इंट्रोड्यूस करी इन्होंने. पहला था मेडिसिन, एम फॉर मेडिसिन एंड एम फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है. तो कौन लेकर जाएगा अरब वर्ल्ड में ये दोनों सब्जेक्ट्स? सो मेनी अरब ट्रैवलर्स वर देयर. देयर वर सो मेनी अरब ट्रैवलर्स हु वर हियर, है ना. तो जब जाएंगे तो वहां पर जाके बताएंगे. आपको पता है वहां पर तो ऐसे मेडिसिन होता है. सो दे आर हैविंग लाइक मैथमेटिक्स आल्सो. बहुत बढ़िया. So it was the Arab travelers like who took these two things from India to Arab world, mathematics and medicine. तो इसके लिए प्रतिहारास थोड़ा सा important होंगे हमारे लिए. ठीक है. The system of administration का जो system है, they will be following the system where that was adopted by Guptas. Also the same system was adopted by Harsha. याद है ये बात आपको? हर्ष ने भी same system adopt किया था, if you remember. ये बात मैंने बताई थी आपको, आपने लिखा भी होगा ये पॉइंट. हर्षा हैड अडॉप्टेड द सेम सिस्टम एज ऑफ गुप्तास. नाउ द सेम सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय प्रतिहारास एज वेल. द सेम सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय प्रतिहारास एज वेल. यानी कौन सा सिस्टम? लाइक मोनार्क सेंट्रल अथॉरिटी थी. एंड इनके यहाँ पर प्रतिहारास में क्या था कि कोर्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू. Court was divided into two. Like one part was looking after the political affairs, and the other it was looking after the cultural affairs. It was looking after cultural affairs. ठीक है? Political affairs and cultural affairs. These were the two things, like two divisions. These were the two divisions that were present in the court. ठीक है. ये जो कल्चरल अफेयर्स है इसके अंदर क्या आएगा? व्हाट डू यू फील इस कल्चरल अफेयर के अंदर क्या आएगा? व्हाट विल बी देयर इन द कल्चरल अफेयर? रिलीजन? अरे नहीं, कहाँ रिलीजन, कुछ और ही था. दैट वाज एंटरटेनमेंट था. एंड इसके अंदर देयर वर डांसिंग गर्ल्स and musicians. Dancing girls and musicians. ठीक है. Dancing girls and musicians. Okay. जैसे जब आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया होगा, one leader of revolt of 1857, who was the leader of revolt of 1857 by the way in Awadh? Can anyone tell me who was the leader of revolt of 1857 in Awadh? अवध में कौन था लीडर? पता किसी को? आई गेस मेरी पीपीटी तो होगी आपके पास में, है ना. वो प्रेजेंटेशन ही मैंने बनाई हुई है. तो उसमें एक आप पिक्चर्स एंड लीडर्स, एक स्लाइड है लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. देयर इज अ स्लाइड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. तो उस स्लाइड में देयर इज अ पिक्चर. नो वन रिमेंबर्स हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट लाइक इन अवध. लखनऊ में कौन था? अरे लखनऊ, अवध बोले तो लखनऊ. नो वन रिमेंबर्स. Oh my God, revolt of 1857, seriously? It was one lady. जानवी ने सही पहचाना. बेगम हजरत महल. अब मुझे क्यों याद आई है बेगम हजरत महल? तो बेगम हजरत महल मुझे इसलिए याद आई, there's a story related to बेगम हजरत महल. तो बेगम हजरत महल, मुझे नहीं लगता आपको इसके बारे में शायद पता होगा, बट बेगम हजरत महल का रियल नाम था मोहम्मदी खानूम. Her real name was Mohammadi Khanum. Okay, this was the real name of Begum Hazrat Mahal. And when she was born, she was born in a very poor family. ठीक है. She was born to a very poor family, and उसके पेरेंट्स के पास इतना भी पैसा नहीं था that they could like brought up. So what they did, they sold her, and होते होते she reached royal harem.
she reached royal harem. What is harem? Harem क्या होता है? सुना है आपने harem? HAREM, harem. It is the area where the queen and the mistress and all those like ladies are there, है ना, singing, dancing, वो सब जो होता है. So she was sold, like होते होते बिकते बिकते she reached royal harem. When she was sold to royal harem, she was made an attendant. उसको बना दिया गया एक attendant. But as she grew up, she became very beautiful. She became like she was a very beautiful girl. As she grew up, like लोगों ने देखा कि she is very beautiful. Within this harem, there is something called, there was something called as parikhana. Parikhana. Now these are some stories, इससे ना याद रहता है, और कुछ नहीं, स्टोरी से कुछ नहीं करना हमें. These stories are just to make the subject interesting and हमें याद रहता है. अब हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि who was leader of the revolt in Awadh and in Lucknow. ठीक है? And why? Who was the leader and why? So she was transferred to this Parikhana. Parikhana को बोलते थे House of Fairies. It was also called as House of Fairies. अब House of Fairies में पहुंच गए, तो House of Fairies में जो जितने भी लोग लड़कियां जाती थी, basically they became professional singers and dancers. And इनका काम क्या होता था? Basically their work was to entertain the ruler, entertain the king, है ना, जो आपका एम्परर है, उसको आपको खुश करना है. ठीक है, उसको खुश करना है. तो उसको खुश करते करते अगर किंग को कोई लेडी पसंद आएगी, है ना, अगर कोई लड़की पसंद आएगी, तो किंग विल बी हैविंग लाइक किंग विल बी स्पेंडिंग टाइम विद दैट गर्ल एज वेल. सो ऐसे ही दिस लेडी बिकेम वन कॉन्ट्रैक्ट वाइव्स. नाउ आई गेस आप समझ गए होंगे कॉन्ट्रैक्ट वाइफ मैं किस एंगल से बोल रहा हूँ. ठीक है, contract wives. Why I'm using the word contract wife. So she became one contract wife of the ruler. ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह, आपको पता ही होगा, नवाब वाजिद अली शाह की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन गई. अब एक रूल था, if this lady will give a birth to a son, अगर इस लेडी ने एक सन को जन्म दे दिया, she will be regarded as full-fledged wife. ये फुल फ्लेजेड वाइफ बन जाएगी. ठीक है, she will be full-fledged wife. So she gave birth to a son. The name of the son was Bridges Qadr. The name of the son was Bridges Qadr. ठीक है, ब्रिजेस कद्र पैदा हो गए, लेकिन 1856 में तो अवध एनेक्स कर लिया गया. In the year 1856 अवध was annexed. एंड नवाब वाजिद अली शाह इनको बोला कि आप उठो और कलकत्ता जाइए, है ना. he was transferred to Calcutta. नवाब वाजिद अली शाह 1856 के बाद में जैसे ही 1857 आया, so like people from मेरठ, क्योंकि रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुआ था, like people from मेरठ वो सब उठे और कहाँ के लिए चल दिए? 10 मई को. On 10th of May people started towards Delhi. और दिल्ली में भी कहाँ पे? Which place in Delhi? Within Delhi, it was Red Fort. Why? To proclaim Bahadur Shah Zafar as their emperor. है ना. ये एक अलग बात है कि बूढ़े हो चुके थे, 72 इयर्स की एज थी, और डर गए कि क्यों गेट खोल दिया आपने, है ना, मत खोलो गेट वेट भैया. तो उनकी वाइफ was the person जिन्होंने गेट वेट खुलवाया था. वाइफ was 35 years old by the way. He was 72. So 1857 में जैसे लोग मेरठ से दिल्ली पहुंचे थे, उसी प्रकार in the same way people from the hinterland of Lucknow reached to the palace of Nawab Wajid Ali Shah. But लोगों को पता है नवाब वाजिद अली शाह तो नहीं है. So people demanded कि जो नवाब ब्रिजेस कद्र है ये लीड करें. But he was too young. He was 12 years of age. He was a child. 12 years of age. Because he was 12 years of age, so his mother, Begum Hazrat Mahal,
led the revolt in Lucknow for the people. अभी पता चल गया क्यों क्यों इतनी बड़ी स्टोरी घुमा कर लेकर आया मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना? आई होप आपको याद रहेगा. विल यू रिमेंबर दिस नाउ? बेगम हजरत महल. वाई, देखो हमें कैसे करना था ना उस स्लाइड के अंदर, हाउ वी नीड टू डू इट. जितने भी लीडर्स थे ना, देयर इज स्टोरी बिहाइंड एवरी लीडर. व्हाई एवरी लीडर बिकेम अ लीडर ऑफ रिवोल्ट. व्हाई एवरी लीडर बिकेम अ लीडर ऑफ रिवोल्ट. जितने भी लीडर थे, है ना, whether it was Kumar Singh, whether it was Khan Bahadur, whether it was Maulvi Ahmadullah, whether it was Tantia Tope, whether it was that Nana Sahib, है ना, तो क्यों लीडर बन गए? why they joined that revolt. तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी अब ये कोई पूछेगा कि लखनऊ में बताओ कौन था लीडर, है ना, ये यूपीएससी नहीं पूछेगा. ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे की चीज है. तो यूपीएससी कुछ और पूछेगा. तो ये मैंने क्यों बताया आपको? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोर्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू. कमिंग इनटू प्रतिहारास नाउ, कोर्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कल्चरल अफेयर्स. और कल्चरल अफेयर्स में डांसिंग गर्ल्स एंड म्यूजिशियंस वर देयर. डांसिंग गर्ल्स एंड म्यूजिशियंस वर देयर. तो डांसिंग गर्ल्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है इंडिया के अंदर में. ठीक है, डांसिंग गर्ल्स का जो कंसेप्ट है दैट इज लाइक क्वाइट ओल्ड. एंड द बुक नाट्य शास्त्र, भरत मुनि has written a book called as नाट्य शास्त्र. उसके अंदर से कई सारे क्लासिकल डांसेस आए थे निकल के, है ना. ये जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तब बताऊंगा स्टोरीज. तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये सब तो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना. ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट डांसेस आर अ फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. डू यू नो दिस? तो सब सारे डांसेस को बैन कर दिया गया था. ऑल क्लासिकल डांसेस वर बैंड. वो तो बाद में उनका रिवाइवल हुआ सारे डांसेस का. ओके, चलो. सो दीज पीपल प्रतिहारास ये अरब से. कल भी मुझसे किसने पूछा था ये इंपोर्ट क्या करते थे, तो मैंने कल बताया था हॉर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी दैट दीज पीपल इंक्लूडिंग प्रतिहारास एज वेल एज राष्ट्रकूटास ये इंपोर्ट करते थे. कहां से? अरेबिया से, सऊदी अरेबिया, अरब, और यू कैन से वेस्ट एशिया. वेरी लाइक जनरलाइज्ड वे में आप बोल सकते हो वेस्ट एशिया. सो फ्रॉम वेस्ट एशिया दे यूज्ड टू इंपोर्ट हॉर्सेस. ठीक है, वेस्ट एशिया से ये हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे. सो दिस वाज अ प्रतिहारास. अब देखते हैं पालास. फटाफट पालास को भी देख लेते हैं. ये सब ना, one thing related to this, this नाट्य शास्त्र was written during this period. नो, अरे नहीं, नाट्य शास्त्र इस टाइम पे कहाँ लिखा गया था? मैं आर्ट एंड कल्चर बता दूंगा उसको, आपको अलग से बताऊंगा. उसका नाट्य शास्त्र अलग से लेकर जाऊंगा. वो तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया, पता नहीं क्यों. ओके, चलो चलते हैं पालास में. नाउ मूविंग ऑन टू पालास. ओके, बिफोर पालास प्रतिहारास की देखो दो टेम्पल्स दिखाता हूं आपको. दिस इज महावीर जैन टेम्पल दैट इज इन ओसिया. डू यू नो वेयर इज दिस प्लेस ओसिया? Where is this place Osia? Anyone? कहां पर है? Which state? Osia. No one? Kanchi, very good. It is in Rajasthan. राजस्थान में है, and in within Rajasthan with outskirts of Jodhpur. Why this place is famous? This place is famous for two things. Ocean. You all must have heard some people Bishnoi community. सुना है बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में? कांची क्यों, सॉरी जानवी क्यों सुना है? Where? Why this community is famous? Bishnoi community famous for? Some conservation. किस चीज का कंजर्वेशन करते हैं? ट्राइबल कंजर्वेशन. It is they are considered as great environmentalists. ठीक है, तो एक वो हुआ था ना, चिपको आंदोलन हुआ था, अगर आपको याद हो. पुराने जमाने का चिपको आंदोलन था, है ना. तो there were some trees, खेजरी trees थे. So these people ये चिपक गए, they hugged the trees जब लोग उनको काटने के लिए पहुंचे थे, है ना. So they were the first environmentalists of India. And now there is a place called in Jodhpur there's a place, there's a fort called as Fort Khejarla.
फोर्ट खेजरला, मृगांक सुंदरलाल बहुगुणा तो बहुत बाद में आए हैं इनके, एंड ही हैज लाइक adopted the same methodology as these people had adopted. Bishnois तो बहुत पहले ये काम कर चुके थे. खेजरला, there's a fort खेजरला in Jodhpur. Fort खेजरला in Jodhpur, around 50 kilometers from Jodhpur. तो जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में अभी भी जगह है खेजरला नाम से, where the place is famous for khej retrieves. तो ओसिया is a place where like many people are from this community, Bishnois. ठीक है. So this is something positive side. एक negative side भी है. Negative side. The negative side is that this community are like now from last some years now these people, they have like what they are doing. ये दो काम करते हैं. One, they are truck drivers. Most of them are truck drivers. And most of them, not all, but most of them are drug smugglers. This is, मैं ये आज का बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है, drug smugglers. So truck drivers plus drug smugglers, सोचो कितना बढ़िया लिंक है ना. आई होप बाकी तो समझ गए होंगे. अगर कोई ट्रक जा रहा है तो ट्रक के अंदर आपको सामान कुछ ना कुछ मिल जाएगा. एंड स्पेसिफिकली वन ड्रग, केवल एक ड्रग, ऐसा नहीं कि साइड ड्रग्स ना, मुंबई के जैसा नहीं, जस्ट वन ड्रग, एंड द ड्रग इज ओपियम. The drug is opium, and this opium is not considered as a drug by these people. It has got social acceptance. It has got social acceptance within the people of this community, as well as like not only this community, in whole Marwar area, which comprises Jodhpur, Pali, ये जो पूरा region है ना, यहाँ पर it has social acceptance. इतनी ज़्यादा social acceptance है, whether it is a like some marriage party, कोई शादी है, like some child has born or some death has taken place. So the person who is the host needs to serve opium to the guests. और अगर host ने काम नहीं किया, ये काम अगर नहीं किया host ने, तो उसका बिरादरी निकाला हो जाता है. You understand what is बिरादरी निकाला? He is not considered as part of their community. That host is not considered part of their community. So अब समझिए कितना मुश्किल भरा ये काम होगा. Now they have to do this thing. There are so many agencies working like to arrest all these people. कितना अब समझ लो कैसा सिनेरियो होगा, है ना. One side society, another side like enforcement. So two things like आमने सामने, है ना, two things आमने सामने. So I worked in this area for around 4 years. है ना, I was in Jodhpur for 4 years. So this was one very important area for me. तो जब भी ये टेम्पल आता है तो मुझे मेरा याद आ जाता है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करके और गाड़ी के अंदर we were there in the car for कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, just in car, है ना. We cannot move to any hotel etc. कहीं नहीं जा सकते हो because जानवी सिंह क्योंकि आपको information gather करनी है ना. Like who is the main kingpin of the area? हमें तो बस kingpin से मतलब है ना. Especially like we wanted kingpins, not that छोटा मोटा kingpins चाहिए हमें. So kingpins जो होते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं एरिया में, वो यहाँ पर आते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं एंड उसके बाद वो सामान खरीदने जाते हैं. It is something like this. Sabna, yes, I attended one. I attended one, and in fact, I was also served something, and you will not believe that what a scene it was. ठीक है, मैं भी एक जगह पहुंचा था, and अभी मुझे ये पता था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, but मुझे ये नहीं पता था what is the method of taking that thing. So you know how that thing is taken. So there is a funnel, है ना, there is a funnel. तो एक funnel होता है, इसका एक stand होता है, something like this. जैसे laboratory में stands होता है. So funnel के अंदर में they'll use one paper sort of a thing like filter paper, and यहाँ पर they'll put that opium plus water, and then the water droplets will be coming from here, drop by drop, one drop, and this water is then given as prasad.
as prasad. I was also given this prasad once. एक बार लेना पड़ा था मुझे भी, है ना? So, so it is said, if you want to clean the pipe, there is a pipe, you want to clean it, you need to put your hand inside. And when you are putting your hand inside the pipe to clean it, your hand will also get dirty. So it is something like reality of enforcement. Law enforcement की एक छोटी सी problem है, क्या कर सकते हैं? You need to become the part of it. But the thing is कि इस सबसे दूर रहना चाहिए. Very like बिल्कुल never, one must never be a part of all these things. So this was one temple, Mahavir Jain temple, Ocean. It's a very nice, very beautiful temple. It was built by Vatsa Raja. You can remember it was built by Pratiharas. इतना याद कर रख लेना. It was built by Pratiharas. ठीक है. There is one more temple in Morena. Morena is a place near Gwalior. यहाँ पर एक टेम्पल है बातेश्वर टेम्पल. इट वाज आल्सो बिल्ड बाय प्रतिहारास. ये दो टेम्पल याद रखना, विच वाज बिल्ड बाय प्रतिहारास. उसके बाद आते हैं पालास में. सो हु वर पालास एंड अब ये कहां से आ गए पालास? बेसिकली पालास, द वर्ड पाला कई बार एक हिंदी वर्ड होता है ना कि आपको पता है आपको किसने पाला है. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? पालना, है ना, आपको किसने पाला है. सो पाला, द वर्ड पाला एक्चुअली मीन्स प्रोटेक्टर. द वर्ड पाला एक्चुअली मीन्स प्रोटेक्टर. ठीक है, इसका मतलब होता है यस नर्चर, प्रोटेक्टर और नर्चर. सही है जानवी. सो पाला का मतलब ये होता है. So again the same story. After Harshvardhan, different kingdoms in different areas. So उनमें से एक थे पालास. तो ये कौन से एरिया में आए थे पालास? They came in you can say eastern and some parts of northern India. They replaced actually एक शशांक था ना, किंग शशांक, गॉड किंग शशांक, अगर आपको याद होगा तो, है ना, गॉड किंग शशांक. सो ही वाज रूलिंग द सेम एरिया. तो यहाँ इस रीजन के अंदर लाइक ये लोग आ गए. एंड द प्लेस बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड, द प्लेस वाज एक मल्ला डायनेस्टी करके रूल कर रही थी. देयर वाज अ डायनेस्टी कॉल्ड एज मल्ला डायनेस्टी. तो डायनेस्टी कम एनार्की ज्यादा हो रखा था. इट वाज मोर ऑफ एनार्की. When it was more of anarchy, so now the people thought what to do. तो लोगों ने क्या किया? There was a person, his name was Gopala. And he was elected, like people elected this man as the king. है ना, इसका बाकी कोई रिश्ता नाता नहीं था. He was a you can say commander of army. Then he was elected by the people. कि भैया आप ही रूलर बन जाओ, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. So he became the ruler and then he consolidated the area. The area included mostly Bengal and Bihar. गोपाला फ्रॉम मल्ला डायनेस्टी. जानवी नो, गोपाला तो यहां से तो नई डायनेस्टी शुरू हुई है. पाला डायनेस्टी यहीं से शुरू हुई है. मल्लास तो इससे पहले थे, है ना, मल्लास इससे पहले थे. तो इसके बाद आ गया गोपाल आ गया. गोपाल he was a warrior, he was a like commander and he was elected by a group of people. So he founded Pala Empire. And now this dynasty will patronize one religion, and that is Buddhism, and will be the last dynasty to do so. Last year मेंस में ये क्वेश्चन आया था. यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था, पालाज एंड बुद्धिज्म. ठीक है, पालाज एंड बुद्धिज्म. तो दिस मैन Gopala, he built a famous monastery at Odantapuri. He built a famous monastery at Odantapuri. Odantapuri में एक Odantapuri is a place in Bihar. I'll show you some pics also. एक साथ pics दिखा दूंगा मैं आपको सबकी. So he built one monastery at Odantapuri. Later
It was developed by his son धर्मपाल. गोपाल के बाद कौन आया? धर्मपाल. तो देखो नाम के पीछे पाल पाल के ध्यान रखना, है ना, धर्मपाल. धर्मपाल, अब धर्मपाल ने क्या किया? When Dharamapal came to the throne, so he expanded the kingdom. He expanded the kingdom. He was also Buddhist. And अब बुद्धिस्ट है. एक मोनास्ट्री तो पिताजी ने ढूंढी थी, खोजी थी, एक हम बनाएंगे. तो धर्मपाल he founded विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. ठीक है, यहां से देखना है, all these are Buddhist universities. He founded विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. कहां पर? भागलपुर, बिहार. एट भागलपुर, बिहार. ठीक है. Not only he founded Vikramshila University, he developed Odantapuri University. Also, he revived Nalanda University. जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको भी रिवाइव किया. आई होप यू रिमेंबर नालंदा यूनिवर्सिटी. उस टाइम पे मैंने बताया था इट वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त. इट वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त. और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटीज के लिए 200 विलेजेस का रेवेन्यू साइड पर रख दिया गया था एंड एवरीथिंग वाज मेड फ्री. रिमेंबर दैट? इट वाज धर्मपाल जिसने ये काम किया था. It was Dharamapal, like who granted the revenue of 200 villages for this university. Okay, so अभी देख रहे ना ये बुद्धिज्म के लाइक कितना ज्यादा डेवलपमेंट के लिए कितना काम पालाज ने किया है. और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया उठा के. ओके, सो गोपाला ने ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, धर्मपाला ने ही डेवलप्ड ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, ही फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आल्सो ही रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है. Also he founded, Dharamapal also founded Somapuri. Yes, Janvi. So the monastery and the university at Udantpuri are two different structures, right? It's not the same, or is it? Yeah, no. Monastery is something where monks will be living. University. So who established the university at Udantpuri? Like Dharamapal was the one who revived it, right? Like नहीं. गोपाल ने उदंतपुरी में ये मोनास्ट्री बनाई और इसको फर्दर डेवलप कर दिया धर्मपाल ने. Okay, because you actually mentioned Udantpuri University as well. So अच्छा, वो मेरे गलती से निकल गया. वो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ साथ इट वाज अ मोनास्ट्री, नॉट यूनिवर्सिटी. Okay, sir. ठीक है. एक और मोनास्ट्री थी सोमापुरी मोनास्ट्री. तो सोमापुरी मोनास्ट्री ये कहां पर थी? प्रेजेंट डे बांग्लादेश, पहाड़पुर बांग्लादेश, प्रेजेंट डे पहाड़पुर बांग्लादेश. धर्मपाल. ठीक है. तो दिस मैन वाज आल्सो फाइटिंग. साथ ये काम भी कर रहा है, साथ ही ही इज फाइटिंग एज वेल. है, लड़ाई भी चल रही है. लड़ाई किसके साथ चल रही है ये भी आपको पता है. ही वाज फाइटिंग विद हूम? प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटास, है ना. वो साथ चल रहा है. The next person who came was Devapal. The next person was Devapal. Now this man, he extended the kingdom further towards northeast की तरफ kingdom बढ़ाया, and present day Assam became part of Palas. Present day Palas. Present day Odisha also became part of Palas. ठीक है. He also built many monasteries which जो आज नहीं बची हैं. He also built many monasteries. Also he built many stupas जो अभी नहीं बचे. देवपाला वाले बनाए हुए अभी नहीं बचे. ठीक है. Then देवपाल was the person जिसने अमोघ वर्षा को हराया था. मैंने आपको अगर याद होगा मैंने बताया था अमोघ वर्षा was defeated also, है ना. It was Devpal from Palas who defeated अमोघ वर्षा. ठीक है. Then after Devpal it was Mahipal. Actually Mahipal one. Then Mahipal के बाद में Rampal, and he was the last significant ruler of Palas. इसके बाद में कुछ लोग और आएंगे and the dynasty will change to Senas. There will be a change in the dynasty and the Senas will be coming
and taking the place. ठीक है, इसके बाद कौन आ जाएगा? सेना डायनेस्टी आ जाएगी. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? So this, the period of Palas is known as golden period. मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है? मैंने कल बात ही बताई थी. The period of Palas is called as golden period. I don't know why. मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है? मैंने कल बताया था ये. The period is called as golden period in Bengali history. The period of Palas is called as period of like golden period in Bengali history. बताया था कल मैंने ये. मृगांक is saying yes and दामिनी and शुभ्रा no. तो अकेले मृगांक को बताया मैंने, लेकिन मेरी अलग से बात नहीं हुई मृगांक के साथ में. Okay, no problems. Okay, so they built significant monasteries, they revived Buddhism and also patronized Buddhist centers of learning like Nalanda, Vikramshila, है ना, Nalanda, Vikramshila. Also इन्होंने क्या किया? They sent many Buddhist teachers. Like from their kingdom to various countries, specifically to Southeast Asia, to propagate Buddhism. ठीक है? There were some people who were sent to Tibet also. Sumatra में भी लोग गए थे. Sumatra, I hope आपको पता होगा. Where is Sumatra? Sumatra is in which country? Indonesia. So Java and Sumatra. तो जब आप इंडोनेशिया के बारे में पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि why Java is more developed than Sumatra. Do you know why Java is more developed than Sumatra? Both are in Indonesia, लेकिन Java ज़्यादा developed है. क्यों? क्योंकि Java is a place which is having lava soils, which are more fertile. And more fertile soil means better or developed agriculture. है ना, better or developed agriculture. ठीक है? These people also patronized Sanskrit scholars. ठीक है? And these people were having a huge military force. Okay? Got this thing of for Palas. और इनके पास हाँ एक और चीज, among the three Palas, Rashtrakutas and Pratihara, सबसे ज्यादा number of elephants इन्हीं के पास था. If you remember, मैंने आपको पहले ही बताया था, elephants East India से मंगाए जाते थे. Elephants were sourced from East India. If you remember, ये बात मैंने पहले ही बताई थी आपको. Elephants were sourced from East India and they were situated in East India, so they were having largest number of elephants. ठीक है, largest number of elephants. So it was Palas, Pratiharas and Rashtrakutas. All of them were fighting like anything. और लड़ के आपस में सब एक दूसरे के विनाश का कारण बन गए, है ना. The neighbors like लड़ाई वड़ाई करने के बाद क्या होगा, है ना. What will happen actually? Everyone is fighting. एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना, What happened like Guptas में देखा था ना हमने, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त. लड़ाई ठीक है, संभाल भी लिया, लेकिन what happened? They will decline. और उसके बाद में everything over. तो दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग आ जाएंगे. The next in the line is Imperial Cholas. Oh, before Imperial Cholas, I need to show you the pics. I'm so sorry. Just give me a minute. एक बार नंबर देख लेता हूँ. This is the remains of Odantapuri Monastery. Bihar. And this is Somapura Mahavihar, Paharpur, Bangladesh. You can see the beauty of the place. ठीक है, ये असली की पिक है, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है. And it looks so beautiful. जिसने भी फोटोग्राफ लिया है तो बड़ा खूबसूरत लिया है ना, दिन भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना. So this is Somapura Mahavihar, present in Paharpur, Bangladesh. Okay, so Nalanda तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, नालंदा.
चलो अब चलते हैं इंपीरियल चोलास. So this is not Chola, this is Imperial Cholas. Please consider this as Imperial Cholas. Why I'm saying this is not Chola, this is Imperial Cholas. What is the difference? Yes, Sabna. First you batao. I just wanted to know whether any of these monasteries survive and people are using or living. People living ना अभी कहाँ? People ये सब तो सब खराब कर दिया था ना. जब हम करेंगे एबक तो उस टाइम पे बताऊंगा. एबक ने इंडिया के अंदर 2 जनरल्स छोड़े थे. ही लेफ्ट 2 कमांडर्स इन इंडिया. ठीक है, जो 2 कमांडर्स छोड़े थे उनमें से एक का नाम था बख्तियार खिलजी. So he destroyed all. Okay. He destroyed all, Bhaktiar Khilji, and then he himself was killed by like some noble. ऐसा भी नहीं कि वो भी रहा. He was also killed by some noble. तो वो स्टोरी जब अभी अब तो बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं उस एरिया के अंदर भी. Very soon we'll be there. चोलास करना है हमें. Then after चोलास के बाद we'll be doing what? After doing चोलास के बाद में हम करेंगे होयसालास, काकतियास एंड एक और था ना, होयसालास, काकतियास और यादव्स ऑफ देवगिरी. वो करना है. थोड़ा सा राजपूत करना है. एंड देन we'll be entering into दिल्ली सल्तनत. उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत करेंगे. दिल्ली सल्तनत के बाद में हम करेंगे विजयनगर बहामनी किंगडम. उसके बाद में we'll be doing मुगल्स. और एक बार हम मुगल्स पर आ गए, दैट मीन्स वी आर एंटरिंग इनटू मॉडर्न इंडिया 1707. उसके बाद से तो लाइक इट्स एवरीथिंग इज मॉडर्न इंडिया. इनफैक्ट मैं तो मॉडर्न इंडिया शुरू करता हूँ 1498 से, है ना. माय क्लासेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप मेरी जो पीपीटी आपने देखी भी होगी, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1498, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. ठीक है, सो हम तो बहुत जल्दी इधर पहुंचने वाला है. सो वील बी टेकिंग a couple of weeks max at the max, and we'll be like 2 हफ्ते 3 हफ्ते बस लेंगे इस medieval के अंदर. Then we'll be doing art and culture, or we'll be doing modern India as you say. In this I'll take whatever you say as per your demand. आप लोगों से पूछेंगे आपको क्या करना है. ठीक है, तो चलते हैं चोलास, इंपीरियल चोलास. Yes, now my question is, अभी मैंने बोला कि this is not Cholas, these are imperial Cholas. What is the difference between Cholas and Imperial Cholas? Yes, sir. Yes, Kanchi. Sir, I don't know much about it, but earlier you said that Imperial Cholas also controlled Sri Lanka. Means you said you show us one map, I guess. I remember the map. They also controlled, means outside India, extended their empire outside India also. अच्छा, इनका एम्पायर बाहर भी था. कहाँ पे? Sri Lanka, sir. I guess I remember the map. I guess some image. ब्लू और पिंक सा मैप था क्या कुछ? Yes, sir. ब्लू और पिंक मैप, समथिंग लाइक दिस. हाँ. यही मैप था. अच्छा, ओके, ठीक है. नाइस कांची. देखो, जब चोलास की बात आती है ना, देर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ चोलास, मच लाइक पांड्यास. मैंने पांड्यास का ही बताया था ना आपको. इफ यू रिमेंबर पांड्यास, है ना, पहले संगम एज वाले पांड्यास, उसके बाद दूसरे वाले पांड्यास, है ना, फिर उसके बाद चोलास हरा देंगे पांड्यास को. चोलास पांड्यास को खत्म कर देंगे, है ना. चोलास पांड्यास को कहीं छोड़ेंगे. लिटरली दे विल बी एंडिंग पांड्यास लाइक एनीथिंग. बट पांड्यास वापस से उठ के आएंगे फिर से, एंड वापस से वो चोलास को हराएंगे, एंड फिर चोलास को खत्म किया जाएगा पांड्यास के द्वारा. तो ऐसी चोलास थे, लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ चोलास. जो फेज 1 ऑफ चोलास था, दैट वाज संगम एज चोलास. संगम एज, आई होप यू रिमेंबर 3 BC to 3 AD. इतना बढ़िया है ये याद रखने के लिए भी. 3 BC to 3 AD, है ना. 3 BC to 3 AD. उसके बाद आपको पता है व्हाट हैड हैपेंड? कालभ्राज रूल. इट वाज कालभ्राज रूल. कौन आ गए थे? कालभ्राज आ गए थे. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज इंटररेग्नम. अगर आपको याद है तो इंटररेग्नम, दिस इज कॉल्ड एज इंटररेग्नम, है ना. इसको बोलते हैं इंटररेग्नम. देन कालभ्राज के बाद, इंटररेग्नम के बाद में क्या होगा? दीज कालभ्राज, इन कालभ्राज को डिस्प्लेस कर देंगे. पल्लवास, पांड्या, सबके सब मिलके कालभ्राज को हटा के फेंक देंगे.
और उसके बाद what will happen? Cholas will come again. Cholas दोबारा आएंगे 9th century में Cholas आएंगे, and this time the Cholas who will be coming will be called as Imperial Cholas. इन्हीं को हम बोलेंगे Imperial Cholas. They will be there from 9th century to 11th century. And इसके बाद 11th century से लेके 13th century, the Cholas were called as later Cholas. So these are like, ये वाले जो Cholas हैं, they were the most important Cholas. ठीक है, everything should be clear. There are different various phases of Cholas. तो phase 1 था संगम एज वाले Cholas. आप सबको पता है, हमने किया था संगम एज के Cholas. आपको याद भी होगा 3 संगम 1, 2 and 3, like Madurai and Kapadapuram and टोलकप्पियार, ऐसी सी बातें भी आपको शायद याद होगी, मनी मेघलाई टाइप्स की. एंड उसके बाद कालभ्रास आ गए तो चोलास लाइक हाइबरनेशन में चले गए. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर. इंटररेग्नम आ गया 9th century में. इन द 9th century द चोलास दे रोज अगेन. एंड देन 9th से 13th century तक चोलास रहे. 9th to 13th century तक. But 9th century से 11th century के Cholas थे, they were Imperial Cholas. And 11th century से 13th century जो Cholas थे, they were the later Cholas. ये थे later Cholas. ये clear है सबको? Is this thing clear? Different Cholas सबको clear है? किसी को कोई confusion? Anyone with like having any confusion, you can tell me. किसी को कोई भी confusion तो please बता देना. ये सभी सिंधुजा, दामिनी, जानवी, कांची, मृगांक, सपना, साहिती, शुभ्रा, क्लियर है सबको? ओके. सो नाउ अब जब ये इंपीरियल चोलास आएंगे, देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी स्टार्टिंग द डायनेस्टी अगेन, है ना? ऐसे ही कुछ होगा. देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी स्टार्टिंग द डायनेस्टी अगेन, एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु स्टार्टेड डायनेस्टी अगेन फ्रॉम दिस इंपीरियल चोलास, द नेम ऑफ द पर्सन वाज विजय आलया. इसका आलिया भट्ट से कोई लेना देना नहीं है. विजय आलया, है ना? और नॉर्थ इंडिया में आलिया मतलब क्या होता है? इन नॉर्थ इंडिया आलिया मींस आ गया. नॉर्थ इंडिया आ गया को आलिया भी बोलते हैं. आलिया है ना, ये बंदा आलिया. इन रूरल एरियाज द वर्ड आलिया इज यूज्ड. आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट. सो द लैंग्वेज इन हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश, इट्स वेरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज. एक बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज है. so many people say that it's खड़ी बोली and it appears as if the people are fighting. The language is such that it appears that people are fighting. ऐसी लैंग्वेज होती है ना. the son talks to the father in very rude manner, but actually वो rude है ही नहीं. It is actually the language. Actually the language. So whenever I tell people that I belong to Meerut, people don't believe that I belong to Meerut. And why they don't believe is, according to them, I don't have that accent, like for which Meerut is famous for. लोगों को नहीं लगता कि ऐसा मेरा accent है मेरठ वाला. So for this, like my grandfather was very instrumental, क्योंकि उस जमाने में उनकी जॉब लगी थी. And when उनकी जॉब लगी थी, so he came to city, he settled here, and he tried कि उनकी फैमिली में no one speaks that accent. उनको पता था फ्यूचर में सही नहीं है, ना, उनको ऐसा लगता था. तो except his wife, यानी my grandmother, like उन्होंने किसी को वो लैंग्वेज बोलने नहीं दी. My grandmother was something like she died, है ना, बूढ़ी होके उनकी मृत्यु हो गई, बट उनका एक्सेंट कभी चेंज नहीं हुआ, है ना. And my grandfather was having a fight with my grandmother only on this issue. He was fighting every time. Was fighting with my grandmother for this issue. Why you are having this accent? Why you cannot change this accent? That's not good. I don't know, like like who was correct, grandfather or grandmother, but because of him we don't have, like my family does not have that accent. But yes, the area, Janvi, what's the Meerut accent? Oh my God, Janvi, do you want me to speak in the Meerut accent? You'll all run away. You'll all run away. Last class होगी ना, उसे मुझे याद दिलाना. In our last class,
तो उसमें मैं बोल के दिखाऊंगा द एक्सेंट ऑफ मेरठ, ठीक है, सॉन्ग भी सुना दूंगा अपनी इस एक्सेंट का। माय हॉबी सिंगिंग ना, सो आई कैन सिंग द सॉन्ग आल्सो। ओके, सो विजयालय वाज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस डायनेस्टी। तो अब जब डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे तो कहीं से कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी, So basically, he started from a place called as Tanjore. Have you heard the name of this place, Tanjore? Tanjore? नाम सुना है Tanjore? Where is Tanjore? Tanjore, Trichy. अरे मृगांक, इस बार थोड़ा गड़बड़ नहीं कर रहे हो? Tanjore is Thanjavur and Trichy is तिरुचिरापल्ली, है ना? ऐसे ही है ना शायद, आई गेस। सिंधुजा, कैन यू करेक्ट मी इफ आई एम स्पीकिंग रॉन्ग? ऐसे ही है ना? सबना, साहिती, सिंधुजा, आपका पड़ोस का, इट्स योर नेबरहुड, ऑल ऑफ यू। ओके, सो नाउ हु वर दीज पीपल? अब ये लोग थे कौन? इंपीरियल चोलास। ये काम क्या कर रहे थे? सो one view of like scholars say that they were actually feudatories of Pallavas. अभी पता चल रहा है फ्यूडलिज्म कितना इंपॉर्टेंट था, है ना? अभी जैसे मैं बोलता हूँ फ्यूडेटरीज, तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती होगी ना आपकी, as soon as we use the word feudatory, है ना? The picture is, I hope picture is like every time picture is clear. Otherwise आप यही सोचते थे feudatory क्या होता है? So they were feudatories of Pallavas. Pallavas of which city? कांची। वाह, कांची। कांची बहुत बढ़िया। कांची आपको तो ये हमेशा याद रहेगा ना? Okay, so they were the feudatories of Pallavas of Kanchi, and capital अभी भी मैंने बताया तंजौर और तंजावुर। There is a place called as Pinjore also. Have you heard the place Pinjore? ये सुना है पिंजौर? नहीं, कांची नहीं सुना, पिंजौर। शुभ्रा, कहां पर है पिंजौर? ये सनीवन, कहां पर है पिंजौर? पता है किसी को? डोंट रिमेम्बर, जस्ट हर्ड इट। ओके, तो चंडीगढ़ कोई गया है? चंडीगढ़, पंचकुला। जब आप चंडीगढ़ से शिमला के लिए निकलते हो, है ना, चंडीगढ़ से शिमला के लिए जब जाते हो तो रास्ते में जगह आती है पिंजौर, एंड देयर इज अ गार्डन, वेरी फेमस गार्डन हियर, पिंजौर गार्डन। इट इज कॉल्ड एज पिंजौर गार्डन, वेरी फेमस गार्डन, पिंजौर गार्डन। चलो, सो तंजौर वाज द कैपिटल। लेटर ऑन लाइक कैपिटल चेंज हो जाएगा, लेटर कैपिटल गंगई कोंडा चोलापुरम। क्या हो जाएगा? गंगई कोंडा चोलापुरम। तो ये कैपिटल कहां से आएगा, क्यों आएगा, ये बताऊंगा आगे। सो फिलहाल के लिए इतना कि कैपिटल वाज तंजौर, व्हिच विल बी लेटर शिफ्टेड टू गंगई कोंडा चोलापुरम। the exact relation with the संगम चोलास is not very clear. We don't know कि ये क्या सही में उनके descendants हैं भी क्या नहीं. Some scholars say yes they are, some say no. We are not very sure. We are not very sure whether they are the direct descendants of the Sangam Cholas or not. हमें ये बात नहीं पता, लेकिन हमें एक बात तो पता है कि these Cholas, Imperial Cholas, they were having something very strong, and that very strong was navy. They were having a very strong navy, and very good, Janvi, you remember that. So they were having a very strong navy, and with the help of that navy, they conquered outside India. And दो जगह जो especially इन्होंने जीती इंडिया के बाहर, one was Sri Lanka. They annexed Sri Lanka. ठीक है. Also, apart from Sri Lanka, Maldives was also annexed. Then Java. Oh my God! Wow, Janvi, seriously, आप imperialism को बढ़ावा दे रहे हो? Java, Sumatra,
जावा, सुमात्रा, मलेशिया, यहां पर भी इनका इन्फ्लुएंस था, है ना? They were having like their influence here. You can see in this map. आप देख सकते हो इस मैप के अंदर, this was a territory, ये तो मेन टेरिटरी थी. If you can see this as well. देख रहे हो हाफ श्रीलंका. In fact, there will be two people. One is Raja one, another is Rajendra. Raja and Rajendra. तो राजा तो नॉर्दर्न श्रीलंका लेगा एंड राजा कंप्लीट श्रीलंका ले लेगा. Rajendra पूरा श्रीलंका ले लेगा. He will be annexing whole Sri Lanka. Not only he will be annexing whole Sri Lanka, जो सिंहला किंग होगा, he will be taking that king as a prisoner. Arrest कर लेगा उसको. राजेंद्र चोला, जहां जिस टाइम पर चोलास were at their peak. ठीक है. So इसके अलावा if you can see whole this area, पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, this coast is called as what? इस कोस्ट को प्रेजेंट डे में क्या बोलते हैं? कांची is typing. कोरोमंडल. Okay, 1 and 2. Tell me what is coast number 1 and what is coast number 2? Kanchi, if this 1 is Coromandel or 2 is Coromandel? क्या बात है सिंधुजा? This is northern Sarkars. By the way, मॉडर्न में आपको इतना पता होना चाहिए था. This is called as northern Sarkars. यहाँ पर कितना कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं in this region, है ना? कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं. अच्छा, मैंने पहले बताया भी है ना? कर्नाटिक वॉर्स हुए थे यहाँ पर, है ना? And this coast is called as Coromandel coast. This coast is called as Malabar coast. This coast is called as Karwar coast. This coast is called as Konkan coast. याद रखना ये सब चीजें. Okay, so Cholas, apart from this area, if you can see whole of this, like not whole, parts of the Southeast Asia, present day Southeast Asia. ये देख रहे हो, present day Southeast Asia, also part of Myanmar. ये सारा area was under the Chola influence. It was under the Chola influence. Okay, and this is the reason why they are called as Imperial Cholas. इसीलिए तो इनको Imperial Cholas बोलते हैं. This is the only reason why they are called as Imperial Cholas. ठीक है? So now this point clear why they are called as Imperial Cholas, because उनके अंडर में बहुत सारी दूसरे देश भी आते थे, इसलिए इनको Imperial Cholas बोलते हैं. So after Vijayalaya, the next person was Aditya I. You remember Aditya I? कहीं देखा था नाम आदित्य? आदित्य नाम कहीं देखा था? कहाँ था? आदित्य रॉय कपूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं. This is Aditya I. Defeat of whom? Janvi. Final defeat of. There was one person. His name. The meaning of the name was. You cannot, like, who cannot be defeated by anyone. Aparajita. Pallavas. Last ruler. Bhul gaye? Last ruler. Aparajita. So he was defeated by Aditya I. Like he conquered Pallavas. इसने पल्लवास को कॉन्कर किया था Aditya I. After Aditya I, the next person in line was Parantaka I. This man is like Aditya I ने तो पल्लवास को कॉन्कर किया. This man, he conquered Madurai. मदुरई किसके पास था, by the way? Who was having Madurai? Who was having Madurai? Yes? Madurai किसके पास था? It was Pandyas. तो पांड्यास के पास था मदुरई, और मदुरई ले लिया परंटका I ने. ठीक है, मदुरई ले लिया परंटका I ने. तो पांड्या में there was a person, Rajasimha actually. तो you don't require that. Rajasimha.
So he defeated Pandyas. He defeated Pandyas, और जिस बैटल में मदुरई को एनेक्स किया गया था, this battle is called as Battle of Vellore. VELLUR. Battle of Vellore. Battle of Vellore में डिफीट किया पांड्यास को एंड एनेक्स मदुरई. ठीक है, एनेक्स मदुरई. But this man Parantaka one, he was defeated by one Rashtrakuta king. इसको एक राष्ट्रकूता किंग ने हराया था. The name was Krishna III. He was defeated by Rashtrakuta king Krishna III. ठीक है. Then this man Parantaka one, और इसने क्या किया? He took the title. मदुरई जीतने के बाद में क्या टाइटल ले सकता है ये? Remember Vatapi Konda? Not Anaconda, but Vatapi Konda. क्या बात है जानवी, बहुत बढ़िया. He took the title Madurai Konda. है ना? He took the title of Madurai Konda. ठीक है? Okay. Then his इसके कुछ वंशज आएंगे, दो तीन वंशज आएंगे, and then who defeated him? Parantaka one, Krishna III. Abhinay Krishna III of Rashtrakutas. He was defeated. Okay. So अब इसके बाद में one of his successors was Raja one. Now this is the man we need to study. Raja one. Yes, Sabna. Who is Madurai Konda, Krishna III or Parantaka? Parantaka. मदुरई कोंडा तो परंटका होगा ना. ओके, पहले लिया. परंटका ने मदुरई जीत लिया और परंटका खुद राष्ट्रकूता से हार गया. तो राष्ट्रकूता से हारने के बाद मदुरई कोंडा कैसे नाम ले सकता है? क्यों सबना? ओके. So Raja one and his son Rajendra one. So इनके पूरे नाम है राजा चोला, राजेंद्र चोला. चोला लगाते हैं ना, थोड़ा मुश्किल से लगता है, तो इसके नहीं भी लगाओगे चलेगा. But these are the two person who are most important, and it was during their time when Imperial Chola, the rule of Imperial Cholas was at its zenith. The rule was at its zenith under these two people, Raja one and Rajendra Chola one. What is the time period of both of these people? Raja का 985 से लेकर, he ruled from 985 to 1014 AD, and Rajendra one will be 1014 to 1044, 30 years. ठीक है, 30 years. And this man 29, this man 30. Can you see this thing? This is 29 years. 29 बैठेगा ना 985 से 1014. ये जानवी 29 ही बैठेगा. This is 29 and this is 30. So 29, 30 around like roughly the same period. Why I am saying now these people as like very important. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? So Raja one, regarded as greatest Chola ruler, he annexed northern Sri Lanka. ठीक है, he annexed northern Sri Lanka. Also इन्होंने क्या किया? Raja one, he defeated Pandyas very badly. In fact, it is said he destroyed Pandyas. और बचे कुछ राजेंद्र वन खत्म कर देगा. इस हिसाब से इन्होंने काम किया था, है ना? इस हिसाब से काम किया था. So this man, he sent a military expedition to Maldives. सोचो आज मालदीव्स अपना ही हो सकता था, मैं वीजा की जरूरत नहीं थी. 80% of the Indians want to travel to Maldives. अच्छा तभी वो बोला था जानवी, है ना? 80% of the Indians want to travel to Maldives. और पूरा का पूरा बॉलीवुड देखो, जिस टाइम पे हम कोरोना में घर के अंदर थे, the Bollywood and the Tollywood, like the celebrities, they were in Maldives. They were enjoying in Maldives. और हमें चिढ़ाने के लिए इंस्टा पे अपने फोटोज अपलोड कर रहे थे, है ना? ऐसे यही तो हो रहा था. लाइक पिछले कई महीनों से ये तो चल रहा है ना? काम तो कुछ था नहीं, सब कुछ शूटिंग सब बंद पड़ी है. एंड पीपल वर एंजॉयिंग लाइक इन मालदीव्स. सो he sent an expedition to Maldives
and the islands were annexed. The islands were conquered. Okay, islands were conquered. During his time, Raja I, he also defeated Chalukyas of Kalyani. He also defeated Chalukyas of Kalyani. Can you see the period? याद है ना 10th century से 12th century Chalukyas of Kalyani. Remember? है ना सब कुछ mix fit बैठ रहा है ना. So Chalukyas of Kalyani, he defeated Chalukyas of Kalyani. उनको भी इसने हरा दिया. तो Chalukyas of Kalyani were also defeated. And अब रूल चला गया इनका till Tungabhadra. Now the rule was till river Tungabhadra. River Tungabhadra is tributary of which river, by the way? Yes, river Tungabhadra is a tributary of no one? River Krishna. River Krishna, and from where river Krishna originates? ये मैंने पहले ही बताया, मुझे ऐसा याद आ रहा है. River Krishna originates from a very nice Karnataka, very nice hill station in Maharashtra, that is Mahabaleshwar. Janvi, it is Mahabaleshwar. Okay, बहुत खूबसूरत सी एक जगह है. मैं कभी नहीं जा पाया महाबलेश्वर में, 3 बार प्लान कैंसिल हुए थे. मैंने ये बात भी शायद बताई थी. तो रिवर तुंगाभद्रा तक रूल हो गया Cholas, Imperial Cholas का. This man constructed the very famous Brihadeshwara temple. ये नाम सुना है? Brihadeshwara temple. Brihadeshwara temple was constructed by this man. किसने? Raja I. Where this temple is located? Tanjore. Can you see important city? Are you picking the important city? Please pick the important city. मैंने पहले ही बोला था अलग अलग डायनेस्टीज की अपनी अपनी cities important है. So you need to pick the important cities. Yes, Janvi. We've done this temple before also, I guess. I can't recall, but I'm guessing that we've done this temple before. Brihadeshwara temple. Brihadeshwara temple. I'm just asking. I have no idea. I guess no. तंजौर का तो अभी तक नाम नहीं आया मेरे याद में. Oh, okay. है ना तंजौर मुझे नहीं लगता अभी तक हमने कोई तंजौर के बारे में कुछ पढ़ा था. I feel अगर आपको लगता है you can search your notes. तो एक बार मुझे बताना जरूर. क्या पता हमने कहीं पे गलती से ना कर लिया. Sometimes like we are humans, we can commit mistakes. है ना. तो you can please check it. Okay, Janvi. Okay, and Shubhra Singh, it was Bateshwar. Okay, so this is Brihadeshwar temple. It is also called as Rajeshwar temple. Rajeshwar temple. कांची बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया लिंक किया है. जिस टाइम पे हमने पढ़ा था द्रविडियन स्टाइल, उसी टाइम पर मैंने बताया था कि आफ्टर पल्लवास they will be Cholas, under which Dravidian style will be at its peak. है ना. Dravidian style will be at its peak under Cholas. तो बहुत बढ़िया कांची. Okay, so this temple was constructed. This temple, ये temple बना था before the death of this man, 1010 AD में. Also known as Rajeshwar. Also known as Rajeshwar temple. ठीक है. Done. Okay, now this temple is, by the way, dedicated to Shiva. This temple is dedicated to Shiva. He also constructed Buddhist monastery. अब यहाँ पे क्वेश्चन है. He also constructed a Buddhist monastery at Nagpattinam. नागपट्टिनम में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी बनवाई. And the question is, so whether this man was a Buddhist? He is constructing a Buddhist monastery. Then was he a Buddhist? Answer is Kanchi Singh, no. Kanchi Singh, maybe. Sabna is saying no. Shubhra, no. Sahiti, no. इतने श्योर कैसे हो आप? Sabna, how you are so sure? Buddhist क्यों नहीं हो सकता Sabna?
Maybe, but they followed Pallavas, so I guess. They followed Pallavas. एक और अगर आपने थोड़ी देर पहले मेरा एक सेंटेंस कैच किया हो तो मैंने बोला था Palas will be the last. Palas will be the last important dynasty, like which will be giving patronage to Buddhism. याद आया है ना? Palas will be the last. तो Cholas and like Palas इनका थोड़ा सा टाइम मैच भी करेगा, but Cholas, this man was a follower of Shaivism. This man was follower of Shaivism, and this temple was a Shiva temple. Okay, but still now this is a wonderful thing about India. That is the most wonderful thing about India. Like still the person is also constructing a Buddhist monastery at a place Nagapattinam. It was under him that Bay of Bengal was made a Chola lake. इसी के अंडर में चोला लेक बोला जाने लगा था बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बे ऑफ बंगाल. The Dravidian style also reached its zenith under him. The Dravidian style also reached its zenith under him as well as his son. You can see like two people. It was the peak of Cholas. This man is also called as, this is Raja Rajavan. This man is also called as, एक नाम has one title is also called as Ulagalanda Perumala. Ulagalanda Perumal or Perumala. Saiti, what you are typing? Yes, Saiti, you can unmute also, Saiti. No. I was just typing the name. I was just typing in the type section by mistake. Okay. Do you know what is the meaning of this, Saiti? No, sir. No? Ulagalanda Perumal, Perumala? I know it's a god's name. I don't know about the Ulagalanda. ओके, सो मुझे ये नहीं पता इसमें से किसका नाम क्या है ना, आई डोंट नो, बट आई नो दैट दिस मीन्स, इसका मतलब होता है वन हु मेजर्स अर्थ, लाइक विष्णु, ये इस टाइटल का मतलब होता है. ठीक है, तो अब ये टाइटल क्यों उसको दिया गया था? बिकॉज राजा had started a nice land revenue policy. Where the land was surveyed. लैंड का पहले सर्वे होता था. The land was surveyed and after the survey of the land, लैंड का सर्वे होगा, उसके बाद revenue will be assessed. And then revenue will be assessed. Okay, have you written this point? You can write the point. He developed a land revenue policy where land was surveyed and then revenue was assessed. ठीक है, हो गया यहां तक? Now his son Rajendra I, like the time period of the person 10142 to 1044, Rajendra I, he annexed whole Sri Lanka. Not only he annexed whole Sri Lanka, he took Sinhala king Mahinda V as a prisoner. That was in Kanchi. Sindhuja, what was in Kanchi? The Ulagalanda Perumal temple. Ulagalanda Perumal. It is the title which was used for Raja I. Sindhuja. Oh, because there's also a Ulagalanda Perumal temple in Kanchi. Okay. That was also built during the same time.
The name of the temple is Ulagalinda Perumal Temple. Yeah, I'm in not aware. Kanchipuram. It was Okay. by the contribution of Pallavas, Cholas, and all of them together. So contribution of all. Yeah. Okay, I need to check it. Okay, I'll check it and then come back to you tomorrow. इसके ऊपर Ulagalinda Temple. So, but right now we're talking about the title used by Raja Rajavan, right? Yeah. Okay. Right now, I'm talking about the title. Okay. Okay. Took him where? Janvi took him where? Took him where, Janvi? Mahinda V. Like he took Sinhalese king Mahinda V as prisoner. है ना, प्रिजनर उसको उठा के अपने आप लेकर आ गया और प्रिजनर बना लिया, बोला आप मेहमान हो आप हमारे, है ना, तो मेहमान जेल के अंदर मेहमान बना लिया, ठीक है. He completely overran Pandyas, जो बचे कुछ थोड़े बहुत ऊपर अपना सर उठा भी रहे थे, he completely overran Pandyas and eliminated them from the map. He eliminated them from the map. खत्म कर दिया बिल्कुल एकदम, ठीक है. So like he followed the footsteps of his father. He followed the footsteps of his father and followed an aggressive policy of conquest and expansion. He followed an aggressive policy of conquest and expansion. Okay, so whole Sri Lanka was annexed. Then Pandyas were eliminated. He also defeated Chalukyas of Kalyani. दोबारा से बैटल हुआ दोनों के बीच में. Chalukyas of Kalyani. He also defeated Chalukyas of Kalyani. Now this man, अब इसका जो next ये था target, that was North India. ठीक है, the next target was North India. सोचा कि अब चलते हैं north की तरफ चलते हैं. And he started an expedition. Towards North India, and he reached till Ganga. जितने भी rulers रास्ते में आए, how many, like whosoever was on the midway, जो भी कोई रास्ते में आया. Can you see this? When I'm saying to Ganga, so basically I'm talking about this region, and you know that यहाँ पर this is the Sundarban Delta, which is made by river Ganga and as well as river Brahmaputra. ठीक है, तो whosoever like came on the way, he defeated everyone. At that time, the Pala ruler here was Mahipal I. तो Mahipal I को भी हरा दिया. And like जब हरा दिया, गंगा तक पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि he conquered Ganga also. तो अब तो कुछ टाइटल होना चाहिए ऐसा. So he took the title Gangaikonda Chola. और इसी खुशी में, है ना, to celebrate this, he like made a new capital, Gangaikonda Cholapuram. It was this reason why he changed his capital. इसलिए अपना capital change किया, है ना, and now he founded the city of Gangaikonda Cholapuram, and यहाँ पे एक temple बनवाया. The temple is called as Rajeswaram Temple. Gangaikonda Cholapuram, Rajeswaram Temple. ठीक है, यहाँ पर not only like temple बनवाया, अब एक नया city बनाया. It is a greenfield project. The people will be requiring water for irrigation. So he also excavated a large irrigation tank, a very large irrigation tank, and that was called as Chola Gangam. In the same city, Gangaikonda Cholapuram में क्या करा इसने? He constructed the a huge irrigation tank.
गंगईकोंडा चोलापुरम के अंदर ही कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज इरिगेशन टैंक। क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? गंगईकोंडा चोलापुरम के अंदर जो टैंक था उसकी जरूरत क्या पड़ेगी? व्हाट वाज द नीड? What was the need? Agriculture. Agriculture is the need, है ना? Okay. Sabna, where is it? Sabna, it is in Tamil Nadu. तमिल नाडु में प्रेजेंट डे एक डिस्ट्रिक्ट है अरियालूर, आई गेस अरियालूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चोला गंगम, सिंधुजा, इट इज चोला गंगम। तो यहां तक सबको क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टिल हियर? एवरीवन फाइन? यहां तक सबको क्लियर है? गंगईकोंडा चोलापुरम तक ये सब ना? This name of Chola Gangam was written somewhere? No, it is not written somewhere. It's at like इसको बाद में भी इसी नाम से ही जाना जाता था। Okay, ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। दामिनी चोला गंगम is the name of the large irrigation tank that was built by राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ने जो टैंक बनवाया उसका नाम था चोला गंगम, ठीक है। और चोला गंगम was present in which city? It was present in गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? So we'll be continuing Cholas tomorrow, and after doing Cholas के बाद में हम करेंगे क्या करें Cholas के बाद में? So Cholas के बाद हम करते हैं, साउथ में रहते हैं और पहले काकतियाज, होयसालाज, यादवाज, वो पहले ये करते हैं, उसके बाद करेंगे राजपूत, ठीक है। सो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम तंजौर, ये सब ना, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम तंजौर टू गंगईकोंडा चोलापुरम। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।